टिके वेट कर सब पिला आसतु 2 मिनिट स्टार्ट करिया। देखे पिले बर्तमान स्टार्ट करिया फिनल। तो फास्ट पड़े व्हाट इज फिनल। से एच रिमूव हबो ता जाय ओ बसिबो देन को आसीबो C6H5OH दिस इज again go to what is phenols are the organic compound that are used by removing hydrogen atom from benzene। तो जिते गोटे बेंजीन रु एक रु अधिक एच उठिक ता जगह कौन हाइड्रोक्सी ग्रुप बसिबो देन ताको हम कहबा फिनल। हम कौन कहबा फिनल आर आल्सो कॉल्ड कार्बोलिक एसिड। वेरी वेरी इंपोर्टेंट पिले 2008 ने गोटे सट्टा भी पचार थिला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एसिड डज नॉट कंटेन कार्बोक्सिल ग्रुप। दिस इज अदरवाइज कार्बोलिक एसिड। वेरी वेरी इंपोर्टेंट पिले दिस इज अदरवाइज नोन एज कार्बोलिक एसिड। फिनल्स आर अदरवाइज नोन एज कार्बोलिक एसिड। तो व्हाई दिस इज कॉल्ड कार्बोलिक एसिड, व्हाई this is called कार्बोलिक एसिड। आपको बोले कहीं हमें कार्बोक्सिल एसिड कहले बिकॉज इट वाज फर्स्ट इंडस्ट्रियली प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल टार। इट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड फ्रॉम कोल टार। it was discovered from coal tar। it is an industrial method of preparation, that's why this is called carbolic acid। this was called carbolic acid। very very important play this ग्रुप बा जाक हम कहूँ COOH है। तो सी केतु बेंजोइक एसिड की CH3COH बेंजोइक एसिड फॉर्मूला हला C6H5। कार्बोलिक एसिड प्ले दिस इज नोन एज फिनल। दिस इज कॉल्ड फिनल, दैट्स व्हाई इट डज नॉट कंटेन कौन कार्बोक्सिलिक। तो
तो करेक्ट आंसर कि आसे आमर कार्बोलिक एसिड सर्ट टाइप पचार तुम देख 2018 पढ़ी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग व्हिच ऑफ द एसिड डज नॉट कार्बोलिक कार्बोक्सिलिक समस्ते भावुँ एटा कार्बोलिक दैट इज कार्बोलिक है एसिड देन पढ़ा तार क्लासिफिकेशन व्हाट इज कार्बोक्सिलिक एसिड फिनल फिनल्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट प्रोड्यूस फ्रॉम बेंजीन तो जो बेंजीन आम एक रु अधिक हाइड्रोजन आटम रिमूव करके एक रु अधिक OH ग्रुप बस कौन फॉर्मेशन हम आमर फिनल फॉर्मेशन हम एक सर्वप्रथम कोल्ड प्रोसेस रे है इंडस्ट्रियल मेथड प्रिपरेशन ऑफ फिनल जेहेतु सर्वप्रथम कोल्टार प्रोसेस डिस्कवर करा जायतिला दैट्स व्हाई कॉल्ड कार्बोलिक एसिड अगेन से गोटे 2008 क्वेश्चन पचार एक मार्क 1 मार्क व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एसिड डज नॉट कंटेन कार्बोलिक एसिड से कहे आंक मध्य कौ थे कार्बोक्सिलिक ग्रुप ना कारण कार्बोक्सिलिक माने COH तो एसिड एसिडिक एसिड फॉर्मुला अच्छे CH3COH ये भी गोटे एसिड तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप एसिड आम ये अच्छी COH बेंजोइक एसिड C6H5COH ये भी आम कौन COH ग्रुप अच्छी कार्बोलिक एसिड दैट इज कॉल्ड फिनल कार्बोलिक एसिड also called phenol and classification of a phenol classification of a phenol classification and nomenclature आउट बेले कमेंट लिखि जणाम सेक्शन तक सॉल्व करिबला क्लासिफिकेशन एंड nomenclature ट्राइहाइड्रिक फिनल तो गोटे गोटे तार एग्जांपल लेकिन तार नोमेनक्लेचर करिया फास्ट आसला OH तो आन OH आपको आम कौन कह दैट इज कॉल्ड बेंजीन ए सॉरी दैट इज कॉल्ड फिनल कहि परिबा बा ताको आम कहि परिबा एटा बेंजीन OH रो सफिक्स लेटर अछि OL ताको इटु ओमिट हे गेला ताको फिनल इज आल्सो नोन एज कार्बोलिक एसिड बा ताको आम कह बेनल बेंजीनो व्हाई दिस इज कॉल्ड बेंजीनल काहे ना एटा हमर बेंजीन रे लगी OH आ OH आम सफिक्स लेटर हूँ OL दैट्स व्हाई कॉल्ड बेंजीनल BENZEOL स्टार्टिंग लेटर O तेणु ये U मिला तेणु कौन आसला बेंजीनल सेमती पढ़िया OH ये मन CH देख ये कंपाउंड को आम गोटे OH अच्छी ये आम गोटे OH अच्छी बर्तमान आर नोमिंग करवा तो तुम फास्ट रे पढ़ी जिते गोटे कंपाउंड रे एक अधिक डिफरेंट काइंड रो ग्रुप थी तो मध्य जी सीनियर ताकू दिया हम प्रायोरिटी तो आमर OH पारा पोजिशन तो दुईटा जिल अर्थ तेणु अर्थ मिथाइल कहीपर अर्थ मिथाइल रिंग रोज लगे फिनल अर्थ मिथाइल फिनल कहीपर टू हूँ आम अर्थ दुईटा अर्थ हूँ आम टू पोजिशन बा टू मिथाइल फिनल भी कहीपर आम कमनली कहूचे अर्थ क्रेसल OH CH3 लगे कहूँ क्रेसल प्रेजेंस ऑफ बोथ OH एंड CH3 हेल्ले आम कौन कह क्रेसल आपको कहीं अर्थ क्रेसल कहगला बिकज अर्थ आम मिथाइल ग्रुपटा अच्छे से गला अर्थ क्रेसल सिंधु आ गए एग्जांपल जब नमा OH ये मन लगे मेटा लगे थोड़ा CH3 तो प्रेजेंस ऑफ बोथ OH and CH3 ग्रुप इज कॉल्ड क्रेसल तेणु यहाँ आंक भितर सीनियर जो OH
वन टू थ्री तेणु तीन टा आम मेटा पोजिशन तेणु मेटा क्रेसल कहीपर बा मेटा लगे मिथाइल तेणु मेटा मिथाइल रिंग ओएच लगे कौन फिनल तेणु मेटा मिथाइल फिनल कहीपर बा आम तीन मेटा हूँ थ्री पोजिशन तेणु थ्री मिथाइल फिनल भी कहीपर है सिमती आमर आसला मनकर ओ एच मनकर पारे लगे CH3 तेणु आपको कह presence of OH and CH3 is called कौन क्रेसल तो दिस इज कॉल्ड पारा क्रेसल कहीं ना पारा पोजिशन में कौन सी मिथाइल ग्रुप अच्छी 1 2 3 4 सिनी मन कर नवा आउटे एग्जांपल नवा OH ये मोर Cl पी लगे सिने सिनरी देखा तो OH सिनर 1 1 2 तो 2 क्लोरो फिनल बा आमर टूटा भी हूँ अर्थ पोजिशन एक लिखिपारे अर्थ क्लोरो फिनल भी लिखिपर सेमती आउ गोटे एग्जांपल धर सपोज OH मेटा लगी ब्रोमीन तेणु आंक मध्य सिनरी प्ले OH कारण आम सिनरी प्ले COH COR COCl CONS2 CN CHO CO OH एरा सब आम पे सीनियरिटी ग्रुप यहाँ आम सीनियरिटी ग्रुप ग्राजुअली डिक्रिजेस तार पे ऑर्डरटा अच्छे फास्ट तुम बुकटा टी देख जान आउ सीनियरिटी ऑर्डर पड़ो के व्हेन दैट कंपाउंड कंटेन डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शनल ग्रुप जो डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शनल ग्रुप थी डिफरेंट ग्रुप थी तो मध्य सीनियरिटी देखा बर्तमान हिंदी OH लास्ट पे आम हालोजेन अच्छी है बर्तमान ये आम हालोजेन अच्छी हालोजेन आउ रहा फिनल तेणु सीनियर अच्छी OH तेणु OH दिया जीएस ना एक नंबर 1 2 3 4 तेणु थ्रीटा अच्छी मेटा पोजिशन तेणु मेटा ब्रोमो फिनल ये तो समस्त कर सिंधी OH OCH3 मन तो पे यहाँ इथर ग्रुप दैट इज OR तेणु इथर ग्रुप आम OH तले भी अच्छे आम इथर ग्रुप तेणु से सीनियर भी किए आमर OH 1 2 3 4 बर्तमान ये आना हूँ आल्कोक्सी यार सब्स्टिट्यूएंट नेम हूँ आल्कोक्सी जेहेतु आल्कोक्सी गोटे कार्बन अच्छी तेणु धरला मिथोक्सी एल कार्बन गोटे कार्बन अच्छे तेणु एल 1 कार्बन पे पेरेंट हूँ मिथ तेणु मिथोक्सी फिनल ये मिथोक्सी लगी कौ पोजिशन मेटा पोजिशन तेणु मेटा मिथ से आउ गोटे एग्जांपल मन पे आग सब तो कारण जहाँ भी अर्गानिक बोर्ड सब नेमिंग तो तुम जब नेमिंग क्लीयर नथिबो तो असुविधा हम नंबर 1 2 तेणु 4 नाइट्रो 4 नाइट्रो कारण नाइट्रो रिंग रे ओच लगे दिस इज कॉल्ड फिनल तेणु 4 नाइट्रो फिनल और आमिनो पारा आमिनो फिनल भी कहीपर पारा आमिनो फिनल
CHO बोले ए बर्तमान एट जो अच्छी OH और CHO मध्य सीनियर हूँ CHO तेणु एक नंबर ये 2 नंबर तेणु OH र सब्स्टिट्यूएंट हूँ हाइड्रोक्सी लगी अर्थ तेणु अर्थ हाइड्रोक्सी CH ना हूँ बेंजाल्डिहाइड कारण रिंग रे CH लगे बेंजाल्डिहाइड तो दिस इज कॉल्ड ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड बा दिस इज कॉल्ड सालिसिलाल्डिहाइड सालिसिलाल्डिहाइड है OH COH तम OH और CH मध्य सीनियर पिले COH 1 2 सिंध ऑर्थो हाइड्रोक्सी तो रिंग रे COH ले कहबा बेंजोइक एसिड ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड बा एटा जिंदी दिस इज कॉल्ड सालिसिलाल्डिहाइड आल्डिहाइड ग्रुप होची तेणु सालिसिलाल्डिहाइड एडी एसिड ग्रुप होची तेणु सालिसिलिक एसिड है ये थर थिला हमर मोनोहाइड्रिक फिनल एग्जांपल बर्तमान डाइहाइड्रिक फिनल एग्जांपल के देखा डाइहाइड्रिक मीन्स दैट कंटेन 2 नंबर ऑफ OH ग्रुप OH तेणु पिले यही दीटा को OH लगी कौटी बेंजीन रे तेणु तार ना लिखा हम बेंजीन 1 2 एक नंबर 2 नंबर लगी तेणु बेंजीन 1 2 OH रो सफिक्स लेटर होची OL दीटा लगी तेणु डाई OL तेणु बेंजीन 1 2 डाई लिखिपर बा दिस इज कॉल्ड काटेचल ये कमन यहाँ तुमको घोषिया पड़ो माने मन रखा पड़ो दिस इज कॉल्ड काटेचल है बा आउ गोटे भी कहीपर 1 2 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन भी कहीपर 1 2 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन सेम मनकर OH मेटा लगे OH तेणु आना कौन हम 1 2 3 बेंजीन लगी तेणु बेंजीन 1 3 लगला 1 3 डाइल बा कहीपर 1 3 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन बा दिस इज कॉमनली नोन एज रिसोर्सिनल है सिंधी मनकर जेटा आमर पारापोसिन थी OH तो नंबरिंग करवा से 1 2 3 4 तेणु 1 और 4 पोजिशन लगे तेणु बेंजीन 1 4 दीटा लगे डाई OH सफिक्स OL तेणु बेंजीन 1 4 डाइल कहीपर 1 4 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन बा ताको आम कमनली कहूचे हाइड्रोक्विनोन हाइड्रोक्विनोन सी मन गोटे एग्जांपल ट्राइहाइड्रिक एग्जांपल नंबर ट्राइहाइड्रिक मीन्स दैट कंटेन 3 नंबर ऑफ OH ग्रुप OH तो नंबरिंग करवा 1 2 3 4 5 6 तेणु बेंजीन रो 1 2 4 लगला सी बेंजीन भी कहीपर आम कमनली कहूचे हाइड्रोक्सी क्विनल कहीपर नेक्स्ट ना गोटे एग्जांपल नवा
OH combine କରୁଛେ 1 2 3 4 1 2 3 ତେଣୁ ବେଞ୍ଜିନ୍ 1 2 3 ट्राई ओ से सफिक्स হচ্ছে OL ट्राई OL বা আমি 1 2 3 1 2 3 বা this is commonly known as pyrogalon 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 ହେଲା ତ ଇଏ ଥିଲା ପିଲା ଆମର ନୋମେନକ୍ଲେଚର ପାର୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ସାଇଡ୍ ଚେନ୍ ସବଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏଟ୍ର ମୁଁ କିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେବି ବର୍ତ୍ତମାନ କାରଣ ଏମିତି ସବୁ ନେମିଂ କରିବା ତୁମେ ଓଭିୟସ୍ଲି କରିବେ ବୁଝେଇଦେଲି ତୁମକୁ ଏଥର ତୁମେ ନିଜେ ନିଜେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କରିପାରିବ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସାଇଡ୍ ସବଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଦେଖ ମାନେ ଦିସ୍ ଇଜ୍ CH2OH ତ ପିଲେ ଆମର ଯଦି CH2 ଗ୍ରୁପ୍ ମାନେ ରିଙ୍ଗ ସହିତ ସମସ୍ତେ ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ପଡ଼ିଥିବ ରିଙ୍ଗ ସହିତ CH2 ସହିତ ଯଦି କିଛି ଲାଗିଲା ତାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ବେଞ୍ଜାଇଡ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ତ ବେଞ୍ଜାଇଡ୍ ମିଥ୍ मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन वेरी इंपोर्टेंट देखो केमती को ट्रिक्स तार मेथड माने सब फिनल आम तैयारी करबा मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन methods of preparation of a phenol methods of preparation of phenol first from BDC বা যাহা কছে বেঞ্জিন ডাইজোনিয়াম ক্লোরাইড बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड तो जिते बीडीसी को आम बीडीसी दैट इज N प्लस ये तार स्ट्रक्चर बीडीसी रो N प्लस NCl माइनस तो बीडीसी को आम कौन करवा वाटर देकी बॉयल करवा तो वाटर प्लेट भांगी दबा H प्लस OH माइनस तो H प्लस OH से भांगिले यू आमर Cl माइनस H प्लस कौन पड़ा ये HCl पड़ा प्लस मन रख जेकोसी डाइजोनियम सॉल्ट तुम हिट कर नाइट्रोजन गैस टोटल N2 आकर रिलीज हो पड़ा तो N2 पड़ेगा N2 प्लस आर है कौन OH रिंग तेणु OH दिस इज कॉल्ड फिनल एगेन आउ थे कह दूची जो N प्लस NCl माइनस अच्छी वाटर दिया वाटर भांगला H प्लस OH माइनस तेणु ये H प्लस Cl माइनस CCl आगे पड़ेगा N2 तो रिलीज हो पड़ेगा आर है OH तो रिंग रहा OH दिस इज कॉल्ड फिनल वेरी वेरी इंपोर्टेंट मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनल यहाँ थी मोर मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनल फ्रॉम बीडीसी थिला बर्तमान पढ़ा फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक ये बोले वेरी 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 इंपोर्टेंट फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड तब व्हाट इज बेंजीन सल्फोनिक एसिड फॉर्मूला को रिंग रे लगिबो SO3H एटा प्ले मन रख मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड फ्रॉम बेंजीन
एटा भी पचार हाउ डज फिनल इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड स्टार्टिंग फ्रॉम बेंजीन। तो बेंजीन रु आम बेंजीन सल्फोनिक एसिड बाहर करवा देन ता कौन करवा फिनल से तैयारी कर कि देख। तो फास्ट बेंजीन को when benzene is heated with sulfuric acid H2SO4 हिट कले पे आम H2SO4 भांगी पारिबा OH SO3H। तो देख भांगला H2SO4 होगा माने H2SO4 भांगी देले OH SO3H। तो रिंग रे हमर प्रति जाय कौन थाए हाइड्रोजन एटम थाए CH तेणु एठू H एठू OH OH कम्प्लीट पड़ा आमर वाटर पड़ा आ रहा SO3H। दिस इज कॉल्ड बेंजीन सल्फोनिक एसिड। वेरी वेरी इंपोर्टेंट से पचारा हाउ डज बेंजीन फिनल इज प्रिपेयर फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड स्टार्टिंग फ्रॉम बेंजीन। तो तुमको यह करा पड़ो फास्ट कौन बेंजीन को कौन दब सल्फोरिक एसिड की हिट कर हिट कले यू आमर H यू OH कौन पड़ब वाटर और है SO3H तेणु रिंग लगे SO3H। बर्तमान SO3H आम बर्तमान बेंजीन सल्फोनिक एसिड मिलगला। तो हाउ डज फिनल इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड तेणु फास्ट कौन करवा व्हेन बेंजीन सल्फोनिक एसिड SO3H is heated with sodium hydroxide NaOH। तो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड आम हिट करुचे केते टेम्परेचर अराउंड 573 केल्विन 573 बा 623 भितर रखले चलो। तो ये आमर H OH H प्लस OH माइनस प्ले को आगे पड़ा यू H प्लस OH माइनस दैट रिमूव आज वाटर। तो माइनस H2O और है SO3Na कारण यू H यू OH वाटर पड़ा और है कौन SO3Na दैट इज सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। बर्तमान जो सोडियम बेंजीन सल्फोनेट आसले अगेन इट इज हिटेड विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। तो हिट कले कौन हम यू NaH SO3 पड़ा माइनस NaH SO3 माइनस NaH SO3 सोडियम बाई सल्फेट। तो रहा कौन NaHSO3 पड़ा रहा मोर ONA रहा। तो रिंग लगला ONA अगेन व्हेन इट इज एसिडिफिकेशन दैट मीन्स HCl दिहला। बदनाम जो सोडियम फिनॉक्साइड आसी दिस इज कॉल्ड सोडियम फिनॉक्साइड तो सोडियम फिनॉक्साइड में HCl लगा HCl। तो ये हम कौन पड़ेब हियर Na एंड Cl रिमूव पड़ेगा माइनस NaCl पड़ला देना कौन है OH दैट इज कॉल्ड फिनल प्ले वेरी वेरी इंपोर्टेंट। एगेन आउ थे रिवाइज कर दूची। फास्ट आसला बेंजीन तो बेंजीन को कौन देले सल्फोरिक एसिड H2SO4। तो H2SO में हिट करवा तो ये आमर ये भांगी जीव OH SO3H। तो गला परे यू OH H वाटर पड़ेब और है SO3H बेंजीन सल्फोनिक एसिड। when it is again heated with sodium hydroxide around 573 Kelvin heat coagulate again यू NaHSO3 पड़ेगा सॉरी यू H
OH water पड़े remove H OH remove as water SO3Na sodium benzene sulfur कौन दे NaOH देखी हीट करा एगेन कले एठू NaHSO3 पड़ेबो और ONA that is called sodium phenoxide. Again that sodium phenoxide NaCl पड़ेबो और OH. This is the largest most longest step टा phenol. तो ये था preparation of phenol from benzene sulfonic acid. Again पढ़िबा preparation of phenol from salicylic acid sodium salicylate from salicylate. तब sodium, what is the formula for sodium salicylate? Means that ring contain both OH part and heat करिबा का सहित NaOH. तो पिले सपोज मो पाखे भात अच्छी तो भात को देवी मो पाखे मईसी अच्छी मनीष अच्छी खाइब कि दी जना खाइबे तो लाइक जब आम सोडियम हाइड्रोक्साइड दौचे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को ये कार्बोक्सिलेट पार्ट रेस्पॉन्ड कर OH पार्ट भी रेस्पॉन्ड कर तेणु याकू दे ये NaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मीन्स NaOH आपको भी NaOH तो NaOH देले एठू पिला मोर पड़ेब Na2CO3 पड़ेब NO2CO3 एठू HOH वाटर लेकिन आउ थे टिके क्लारिफाई करूँ सोडियम salicylate OH COONA ताको कौन दिहला NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड कहा प्रेजेंस रे कैल्शियम ऑक्साइड. दिस इज कॉल्ड सोडा लाइम मिक्सचर ऑफ sodium hydroxide and CaO is called soda lime. Very important. What is soda lime? That is mixture of PhenOH and CaO is called soda lime. So when sodium salicylate को जब आम कौन करवा सोडियम हाइड्रोक्साइड हीट करवा तो ये रेस्पॉन्ड करिवो ये भी रेस्पॉन्ड करिवो तेणु ये NaOH दे दियो NaOH एठी भी NaOH तो NaOH देले पिले कौन हम एठू OH एठू H एठू वाटर सिंध एठू Na2CO3 पड़ेब रहा कौन ये H रहा ये रहा ON रहा तो रिंग लगला ONA एच लिखा न लिखा सेम एगेन जो आम सोडियम सालिसिलेट आसला फिनॉल इज प्रिपेयर फ्रॉम सोडियम सालिसिलेट तो OA heated with COONA heated with soda lime. So what is soda lime? Mixture of calcium oxide and NaOH is called soda lime. तो NaOH को जेते आम सोडियम सालिसिलेट को तो जेते आम सोडा लाइम दौचे तो बोथ CONA पार्ट और OH पार्ट रेस्पॉन्ड करिवो तेणु एबे जिंदि कहली भात अच्छी गाय खाई पारि मनीष भी खाई पार जी घास देवी ओनली किए गाय खाइब सेमती तो ये NaOH ये भी रेस्पॉन्ड कर सी भी रेस्पॉन्ड कर तो ये Na2CO3 पड़ेगा ये कौन ये OH ये H भी वाटर पड़ला
और है कौन ONA माइनस NaCl और है कौन है तो ये मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम सोडियम सैलिसिलेट बर्तमान पढ़िया प्रिपरेशन फ्रॉम ग्रिगनर्स रिएजेंट प्ले ग्रिगनर्स एमती गोटे रिएजेंट तुम से अल्कोहल तैयारी कर पारिबो आल्डिहाइड तैयारी कर पारिबो कीटोन तैयारी कर पारिबो फिनॉल तैयारी माने कार्बोक्सिलिक एसिड भी तैयारी कर पारिबो आ जो माने एग्जाम में जब प्रिपरेशन पचार एनी हाउ ग्रिगनर्स ही पचार कारण ये गोटे माने इंपोर्टेंट रिएजेंट तो यही रिएजेंट तुम अल्कोहल ऑल माने सब कंपाउंड तैयारी कर पारिबो है तो बर्तमान पढ़िया फ्रॉम ग्रिगनर्स रिएजेंट from Grignard's reagent when phenyl magnesium bromide this is MgBr phenyl magnesium bromide this is phenyl এটা হচ্ছে magnesium এটা হচ্ছে ব্রোমাইড তার সাথে কোন ফিনাইল ম্যাগনেসিয়াম ব্রোমাইড তো যেটা ফিনাইল ম্যাগনেসিয়াম ব্রোমাইড কোহেন ফিনাইল ম্যাগনেসিয়াম ব্রোমাইড is heated with oxygen gas in presence of a dry ether but when oxygen gas is treated with phenyl magnesium bromide half O2 means only O तो आम खाली O तो लिखी पार ना बिकज ऑक्सीजन इज ए डायटोमिक तो ताको O दिहला तो ये कौन आसला पे दैट गिव्स एन एडिशन प्रोडक्ट रिंग फिनाइल by phenoxy O phenoxy magnesium bromide है phenoxy magnesium bromide and that phenoxy magnesium bromide when that phenoxy magnesium bromide phenoxy magnesium bromide when that phenoxy magnesium bromide is treated with hydrolysis that undergoes hydrolysis तो hydrolysis bond break कर दे Mg plus O minus तो need bond एटा भांगे H plus OH minus तेणु प्लस पे गला OH minus ए माइनस गला H plus तेणु ये कौन पड़ा ये आमर ये कौन फिनल पड़ा तेणु ये कौन पड़ा फिनल पड़ा तेणु फिनल OH आ कौन पड़ा ये आमर MgOH Br MgOH this is called phenol again आउ थे रिपीट कर देखो when oxygen gas is passed through phenyl magnesium bromide means O that gives an addition product ring O MgBr but then that phenoxy magnesium bromide undergoes hydrolysis H2O तो इधर H2O भांगला H plus OH minus तो need to bond break bond this is called MgOH ये थी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम ग्रिगनर्स रिएजेंट है
बताने बाय इंडस्ट्रियल मेथड प्रिपरेशन बाय डाउस प्रोसेस कि रेसी प्रोसेस क्यूमिन प्रोसेस ये पिले पढ़िए गोटे बर्तमान पढ़े डाउस प्रोसेस बाय डाउस प्रोसेस वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन डाउस प्रोसेस तो डाउस प्रोसेस is an industrial method or commercial method of preparation of phenol. So what is Dawes process? When that chlorobenzene is heated with sodium hydroxide and that it is not fully 100%, that is 6 to 8%. 6 to 8% of sodium hydroxide is heated. तो ये कौन बैठ प्ले your ClH comes out at minus Cl तो है ONA sodium phenoxide तो when sodium phenoxide undergoes acidification एटू Na एटू Cl कौन पड़ेगा NaCl ताले minus NaCl क्लियर टेम्परेचर मेंटेन करिया पड़िबो दैट इज अंडर 623 केल्विन एंड 300 एटीएम प्रेशर केल्विन 300 एटीएम प्रेशर when chlorobenzene is heated with 6 to 8% of sodium hydroxide 6 to 8% प्लेटा मन रख 6 to 8% of sodium hydroxide heat करिबा here a to Cl a to H कम पड़ेबो HCl और रहला ONA when that sodium phenoxide undergoes acidification means HCl दिहला a to Na a to Cl कम पड़ला NaCl और रहला OH and this is called Dawes process. Again, what is the Dawes process? When chlorobenzene is heated with 6 to 8% of sodium hydroxide, HCl, HCl, sodium phenoxide, and when the sodium phenoxide undergoes acidification means Na, Cl, NaCl, OH, that is called phenol. This is called phenol. Itla by Dawes process. Again kariya by Reszik process. Preparation of a phenol from chlorobenzene. तो chlorobenzene को sodium hydroxide देले this is called Dawes process. किंतु chlorobenzene दिला में air with hydrochloric acid दबा that is called Reszik process. By Reszik process. Reszik process. So what is Reszik process? But how chlorobenzene is prepared by Reszik process when benzene is treated with hydrochloric acid with air. टू मोल्स ऑफ एटा हमर एच अछि प्रति जगह एच अछि एटू एच एट गोटे एच एटू O2 कौन पड़ला H2O टू मोल्स ऑफ क्लोरोबेंजीन प्लस 2H2 एमती कल हम कि भी तुम कर बेंजीन को हीटेड विथ HCl विथ एयर हाफ आउट माने खाली हो तो H2O H2 पड़ला और है Cl दैट इज क्लोरोबेंजीन पता जो क्लोरोबेंजीन आसिला व्हेन दैट क्लोरोबेंजीन अंडर हाइड्रोलिसिस बा व्हेन क्लोरोबेंजीन इज हाइड्रोलिसिस ड्यू टू steam heated water जो हम कहते क्लोरोबेंजीन व्हेन दैट क्लोरोबेंजीन undergoes hydrolysis with the
स्टीम बा सुपर हिटेड जो आम कहे बांफ जो आम कहे सुपर हिटेड स्टीम देले बा वाटर देले केते टेम्परेचर आट 700 केल्विन एटा था 623 केल्विन हो 700 केल्विन तो हिट कले तो देखो आम ये भांगी दबा वाटर भांगे H प्लस OH माइनस तेणु ये Cl एटू H प्लस कौन पड़ेगा HCl और OH plus HCl. This is all about Reschik process. Reschik process. तो बर्तमान पढ़ा बाय क्यूमिन प्रोसेस ये भी बोले गोटे वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्यूमिन प्रोसेस बाय क्यूमिन प्रोसेस तो व्हाट इज क्यूमिन प्रोसेस व्हेन आइसोप्रोपाइल बेंजीन बा दिस इज अदरवाइज नोन एज क्यूमिन व्हेन आइसोप्रोपाइल बेंजीन बा व्हेन ऑक्सीजन गैस इज पास थ्रू आइसोप्रोपाइल बेंजीन ऑक्सीजन गैस हिट करवा तो दैट गिव्स एन एडिशन कंपाउंड CH3 C CH3 इट O इट अच्छी H OH this is called cumin hydrogen peroxide again पिला तो कुछ किन आज प्रोडक्ट देखो CH3 CH3 ये जो O2 को O this H पता this is called cumin hydrogen peroxide when that cumin hydrogen peroxide undergoes heat strong heat आमे करिबा ताली रुपले कम पळे हमर एटू पळो CH3CO मार्क को जो देखो बोले CH3CO पळा पर कोन हला OH plus CH3CO this is phenol हाउ एटा को हम लोग को क्यूमिन प्रोसेस This is called isopropyl benzene by cumin. Isopropyl benzene by called cumin. Again, after repeat course will देखो. When isopropyl benzene CH3, when isopropyl benzene heated the air. That gives an additional product CH3 CH3 it will OH so this is called cumin hydrogen peroxide when that cumin hydrogen peroxide on a strong heat तुम स्ट्रॉन्ग हिट करवा तो ये कौन पड़ेब CH3CO पड़ेब कौन रोचे ये OH रोचे दैट इज OH तो तक स्ट्रॉन्ग पर हिट कर देचे तो ये एसीटोन टी रिमूव हो जाऊँ प्लस कौन CH3CO इतला मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल बाय क्यूमिन प्रोसेस तो ये थिला टोटल ऑल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल बाय फ्रॉम BDC ये थिला हमरो फ्रॉम BDC पर कथली बेंजीन सल्फोनिक एसिड एगेन बेंजीन सल्फोनिक एसिड पर हेची हमरो
from sodium salicylate, from sodium salicylate कौन दिया जी सोडा लाइम दिया सोडा लाइम मिक्सचर ऑफ फेनोल सी यूज कले कौन सोडा लाइम देन आमर कराइला फ्रॉम ग्रिगनस रिएजेंट देन कराइला ग्रिगनस रिएजेंट कराइला आमर बाय डाउस प्रोसेस एटा प्ले वेरी वेरी इंपोर्टेंट डाउस प्रोसेस आमर तो डाउस प्रोसेस कौन तो जिते आमर क्लोरोबेंजीन को सोडियम हाइड्रोक्साइड दबा केते 6 to 8% सोडियम हाइड्रोक्साइड देले टू एच ClHCl पड़ेबो और होला ONA सोडियम फिनॉक्साइड व्हेन दैट सोडियम फिनॉक्साइड अंडरगोस एसिडिफिकेशन HCl हबो एटू NaCl अगेन रिमूव हो रहले OH दैट इज फिनॉल तो ये हमर मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल है तो बर्तमान पड़े तार फिजिकल प्रॉपर्टी व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल प्ले वेरी वेरी इंपोर्टेंट एटे गोटे कॉन्सेप्ट ए कारण तुम किसी सटा भी पड़ो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल ताले व्हाट आर द मेन प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल तो फास्ट पॉइंट है फिनॉल इज अदरवाइज नोन एज also called carbolic acid very very important carbolic acid ताले फिनॉल इज अदरवाइज नोन एज कार्बोक्सिलिक एसिड एवं पिले तुम जे कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड तुम से अल्कोहल पढ़ कि फिनॉल पढ़ कि आल्डिहाइड पढ़ कि कीटोन पढ़ कि आमीन पढ़ कि हालो आल्केन पढ़ जहाँ भी पढ़ समस्त फिजिकल फास्ट गोटे सिक्वेन्स आसला स्टेट मैंने को स्टेट रोचंदी सॉलिड कि लिक्विड गैस तापर थी बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट गोटे कमन थी आउट थी सॉल्युबिलिटी आउट थी ऑर्डरनेस ये चार्टा बेले कमन सबुठी पड़ो स्टेट तो स्टेट से लिक्विड रहे कि गैस रे कि सॉलिड रहे मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग कहाँ MPBP अधिक थी कहीं अधिक रही सॉल्युबिलिटी कहीं कि वाटर सॉल्युबल कि वाटर इनसॉल्युबल से पढ़ा तो फास्ट पढ़े तार स्टेट तो फास्ट आसला स्टेट तो स्टेट आसला फिनॉल्स आर कलरलेस लिक्विड फिनॉल्स आर कलरलेस लिक्विड किंतु तमें ताकू जो तुम ऑक्सीडेशन करिवो एयर प्रेजेंस रे जोटा तुम केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ो ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल तो तुम जो फिनॉल कि तुम एयर तुम ऑक्सीडेशन कर सनलाइट तुम हिट कर दैट गिव्स कलर है एक्चुअली फिनॉल्स आर कलरलेस लिक्विड but when they exposed into light by oxidation they gives color like pink color मन रखी actually phenols are colorless liquid or solid but when they exposed to air by sunlight that becomes color तो एमाने वाटर रे सॉल्युबल रहिबे कहीं जे कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड जो पचार वाटर सॉल्युबल कहीं ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इंटरमॉलिक्युलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नेक्स्ट आसला इट इज सॉल्युबल इन इंटरमॉलिक्युलर यदि पचारे व्हाई अल्कोहल्स आर सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इंटरमॉलिक्युलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग व्हाई इथर्स आर सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इंटरमॉलिक्युलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जहार पचारे से सेम जे ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इंटरमॉलिक्युलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग
So why phenols are soluble in water? Because they have ability to form intermolecular hydrogen bonding with water. देखो किंतु जी phenol. तो पहले हमें पढ़ जाओ what is hydrogen bonding. समझते first of the hydrogen bonding that bond occurs between hydrogen with most electronegative like fluorine किंबा ऑक्सीजन किंबा नाइट्रोजन এই তিনটা তাহলে হোয়াট ইজ হাইড্রোজেন বন্ড দ্যাট বন্ড অকর্স বিটুইন হাইড্রোজেন উইথ মোস্ট ইলেক্ট্রোনেগেটিভ এলিমেন্ট মোস্ট ইলেক্ট্রোনেগেটিভ লাইক ফ্লোরিন ହେଇପାରେ অক্সিজেন ହେଇପାରେ କିମ୍ବା ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ଆଉ କାହା ସହିତ ନାହିଁ କାରଣ ଫ୍ଲୋରିନ୍ ହଉ ଅକ୍ସିଜେନ କିମ୍ବା ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ସହିତ କ'ଣ କରିବ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ବଣ୍ଡ ତିଆରି କରିବ ତ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଫିନଲ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ OH तो फिनोल में वाटर कंटाक्ट आसब यहाँ हूँ मोर वाटर तो वाटर कंटाक्ट आसिले कौन ना यहाँ मोर कौन सृष्टि हम इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये कौन सृष्टि मार्क कौन देख प्ले ये मोर सृष्टि हम इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये जो डॉट लाइन ये जेहतु इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये हो दैट्स व्हाई इट इज सॉल्युबल इन वाटर है नेक्स्ट पते बॉइलिंग पॉइंट पढ़िया ये प्ले वेरी वेरी इंपोर्टेंट नेक्स्ट हूँ बॉइलिंग पॉइंट तीन पचर कहीं आर बॉइलिंग पॉइंट कहीं दियो से ड्यू टू से सेम रीजन ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो मन कह द बॉइलिंग पॉइंट of a phenol are higher than hydrocarbon यदि से आल्केन सहित कंपेयर कर कि आल्किन सहित कंपेयर कर जहाँ सहित कंपेयर कर तो एमानकर बॉइलिंग पॉइंट साधारण अधिक देख कहीं देख से ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग it is due to formation of intermolecular hydrogen bonding again कौन soluble से intermolecular hydrogen bonding MPVP से formation of intermolecular hydrogen bonding तर पचार व्हाई ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज स्टीम वोलेटाइल व्हाइल पैरानाइट्रोफिनॉल इज नॉट से पचार ऑर्थोनाइट्रोफिनॉलटा कहीं वोलेटाइल किंतु पैरानाइट्रोफिनॉल हो पारु ना से सेम रीजन ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहीं ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल कौन हो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग सृष्टि होती तार कौन स्टीम वोलेटाइल बट पैरानाइट्रो इज नॉट वोलेटाइल तो ये थिला तमरो टोटल फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ फिनॉल नेक्स्ट पढ़िबा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल वेरी वेरी इंपोर्टेंट ए बहुत रिएक्शन इंपोर्टेंट आसीबो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल chemical properties of phenol
ताले पचास तो फास्ट पढ़ियो एक्शन विथ मेटल है तो केमिकल पढ़े फास्ट पढ़े एक्शन विथ जिंक डस्ट एक्शन विथ एक्शन विथ हिट करिवो तो ये कौन पड़े प्ले ये आमर ओ यू जेड एन कौन पड़ेब जेड एन ओ तो रहा कौन एच दिस इज कॉल्ड बेंजीन प्लस जेड एन ओ दिस इज कॉल्ड बेंजीन एटा प्ले वेरी वेरी इंपोर्टेंट रिएक्शन मन को तर व्हाट हैपन व्हेन फिनोल इज हीटेड विथ जिंक डस्ट दैट गिव्स यू बेंजीन सपोज गोटे एग्जांपल नेबी ओएच ऑर्थोनाइट्रोफिनोल ऑर्थोनाइट्रोफिनोल को हिंदी जिंक डस्ट हिट करी सुनो जिंक डस्ट की हिट करू माने ओनली दैट OH ग्रुप ओनली दैट OH विल रेस्पोंड नॉट नाइट्रो ग्रुप तो ये ओ यू जिंक जेड पड़ला और रहा बेंजीन ये NO2 ये NO2 लगे तुम जब ऑर्थोनाइट्रोफिनोल को तुम जिंक डस्ट हिट कर दो तार सी कौन देव नाइट्रो बेंजीन देव नाइट्रो बेंजीन वेरी वेरी इंपोर्टेंट व्हाट हैपन व्हेन फिनोल इज हीटेड विथ जिंक डस्ट दैट गिव्स कौन फिनोल दैट गिव्स बेंजीन सिमती मन गोटे गोटे एग्जांपल नवा OH गई व्हाट हैपन सैलिसिलाइल डिहाइड हिट करे एठू जिंक ऑक्साइड आगे पड़ला और ओनली बेंजाइड है तो नेक्स्ट पढ़वा एक्शन विथ एक्टिव मेटल लाइक सोडियम एक्शन विथ एक्टिव मेटल दैट इज सोडियम तो जब फिनोल को फिनोल इज heated all we know that sodium is more reactive than hydrogen so ये कौन करिवो जेहेतु सोडियम टा हाइड्रोजन टू मोर रिएक्टिव तेन कौन करी सोडियम कौन करिवो हाइड्रोजन ता रिप्लेस करगी के बसिबो सोडियम बसिबो हिट कला पर कौन सृष्टि हो ये ओ ताले एच उठला तार बसिला कि Na सोडियम फिनॉक्साइड ये जो H बाहर दैट H डज नॉट एग्जिस्ट एज H दैट एग्जिस्ट एज H2 तो दैट एग्जिस्ट H2 जेहेतु गोटे हाइड्रोजन अच्छी तुमटा कौन करला हाफ H2 है एक कौन सोडियम मेटाल को आम हिट करवा क्या सहित फिनोल सहित तेणु आज सोडियम मेटाल इज भेरी रिएक्टिव दैन हाइड्रोजेन ये कौन कर हाइड्रोजन को रिप्लेस करके सोडियम तो ये हीरोइन उठिबो ता जगह के नन्ना बसिबो तो बर्तमान एच उठी देखे सोडियम बसला बर्तमान दिस इज कॉल्ड सोडियम फिनॉक्साइड सोडियम फिनो जदि मु कभी आपको एसिल कर एसिडिफिकेशन कर एगेन ठीक अच्छे एठू Na एठू Cl नन्ना सहित किए पलैला क्लोरीन ताले कौन है OH रहा प्लस नन्ना क्लोरीन पलैला कौन पड़े ताले कौन फॉर्मेशन हो फिनोल सृष्टि हो कौन तो ये एक्शन विथ एक्टिव मेटल देन बेस तो जेहेतु एसिड ये दब H प्लस ये दब OH में तेणु OH कौन पड़ेब वाटर ताले माइनस H2O कौन है Na नेक्स्ट पढ़ा एक्शन तो जिंक डस्ट कल तार ना एक्शन विथ एसिड क्लोराइड एसिड एनाहाइड्रेट पढ़ा
action with acid chloride, action with acid chloride. तो फिनल को व्हेन दैट फिनल को आम कौन दबा एसिड क्लोराइड दबा RCOCl। तो जब आम फिनल को एसिड क्लोराइड दौचे तो ये बोले भांग माइनस ये भांग प्लस ये भांग H प्लस भांग H प्लस ये भांग माइनस तेणु कौन H प्लस यू Cl माइनस कौन बोल HCl पड़ा माइनस HCl गला पर कौन रहा देख ये रिंग रिंग ओ ओ ये ओ सी आर सी इट इज ईस्टर नेक्स्ट फॉर्म जे RCOR ईस्टर प्लस कम ये मोर HCl वाला एगेन आउ तो कर देख एगेन आउ थे दियो फिनल को कौन दिहला एसिड क्लोराइड सपोज CH3COCl नेली CH3COCl है तो CH3COCl देले ये कौन यू H यू Cl HCl पड़ेब एटा क्या प्रेजेंस कर दैट इज पाइरिडिन तो पाइरिडिन यूज कला पर माइनस HCl पड़ला और है रिंग रिंग ओ ओ CO CH3 आनहाजी फिनाइल एसीटेट कारण यहाँ जो फिनाइल ये CH3CO कौन एसीटेट फिनाइल एसीटेट ना आउ थे भी कर देख बोले फिनल रिएक्ट एसिटिल क्लोराइड लिखि CH3COCl एसिटिल क्लोराइड देला परे एटा होचे H एटा होचे Cl माइनस एटी कम पड़ला हमर HCl पड़ला रहला पर कोन होला रिंग O CO CH3 प्लस HCl वाला कोन बाईटा तुम लिखि पारियो OOC CH लिख लो चलियो दैट इज RCOR दिस आना जब फिनाइल एसीटेट बा दिस इज कॉल्ड आसाइलेशन रिएक्शन दिस इज कॉल्ड आसाइलेशन रिएक्शन बर्तमान करे एसिड एनहाइड्रेट दबा सिंधी फिनल को एसिड एनहाइड्रेट सब RCO रो होल टू O तेणु आपको मुझे लिखिपारि RCO सॉरी RCO है दिस RCO रो होल टू O एसिड एनहाइड एटा बॉन्डिंग फॉर्म तार कला पर H इटू RCOH पड़ला RCOOH तो RCOH गला परे आ कौन रोची रिंग O COR प्लस कौन RCOOH दिस इज कॉल्ड ईस्टर but this is called and this reaction is also called as acylation reaction
ହେଲା ସିନୁ ତାର ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେବା ମନେକର ଏସିଟିକ୍ ଆନହାଇଡ୍ ଦେବା ଫିନଲ୍କୁ एसिटिक अनहाइड्रेट CH3 CO रो होल टू O हिट कल कला पे लिख CH3 CO O CO CH3 ताको एटा को ओपन कर देले बॉन्डिंग पॉइंट ओपन हैला CH3CO 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 CH3 होल टू हैगला O O एटू H CH3COH पळेबो आ कोन बेटी रिंग O O CO CH3 प्लस CH3COH आनहाज कोन फिनाइल एसीटेट फिनाइल एसीटेट तो ये भी हमार एक्शन होती एसिड क्लोराइड बर्तमान बड़े एक्शन होती अमोनिया सब रिएक्शन पे स्क्रीनशॉट टिके मार दो तो टिके एक्शन विथ अमोनिया तो जिते फिनल दैट इज OH को अमोनिया दब NH3 तो NH2 मु लिखिपर H NH2 को हिट कर क्या प्रेजेंस रे अनहाइड्रस ZnCl2 तो हिट कला कौन हम ये OH ये H दैट कम्स एट वाटर तले रहिला रिंग NH2 plus S2 that gives कौन aniline aniline तो अगेन आउथरे कहूँ कि बुझी पार्थ्व तेरे फिनल को कौन देली अमोनिया देली NH3 तो NH3 भांगी देली H NH2 तो ये OH ये H that comes at water गला रिंग NH2 NH गला अनिलीन है तो नेक्स्ट पढ़ा एक्शन होती बेंजोइल क्लोराइड ये भी गोटे वेरी 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 इंपोर्टेंट रिएक्शन बट दिस इज कॉल्ड स्कॉटन बाउमैन रिएक्शन एक्शन विथ benzoyl chloride action with benzoyl chloride तो जिते when that benzene is when phenol is treated with benzoyl chloride that is C6H5COCl C6H5 COCl हिट करियो कहा प्रेजेंस रे सोडियम हाइड्रोक्साइड तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड हिट करूचे तो ये पीले आम ये कौन पड़ेब H ये Cl HCl पड़ेब आ कौन रिंग O CO C6H5 प्लस HCl and has phenyl benzoate बता कोचे दिस रिएक्शन इज नोन एज स्कॉटन बाउमैन रिएक्शन स्कॉटन बाउमैन रिएक्शन वेरी वेरी इंपोर्टेंट रिएक्शन नेक्स्ट पढ़ा एक्शन विथ ग्रिग्नार्स रिएजेंट आ स्क्रीनशॉट टिके मार दे बोले सब रिएक्शन स्क्रीनशॉट मार दो तो कि काटा होची रिएक्शन तुम जान परियो
नेक्स्ट action थी Grignard's reagent. Action with Grignard's reagent. So when phenol is it treated with Grignard's reagent RMGX. सिन भांगा mg एटा प्लस ये दब माइनस ये दब प्लस ये दब माइनस तेणु कौन पड़े आर एच तो आर एच गला कौन है रिंग ओ एम जी एक्स तो ये कौन पड़े आर एच पड़े प्लस आर एच दिस इज कॉल्ड कौन फिनोक्सी मैग्नीशियम हालाइट अगेन तार प्लेट अगेन आउ थे कुछ देखो ठीक भल से when phenol is treated with a Grignard's reagent that's RMGX तो ये भांगला प्लस भांगला माइनस ये प्लस ये माइनस तेणु आर एच पलैला आ कौन है रिंग ओ एम जी एक्स प्लस आर एच दिस इज द phenol on treatment with a Grignard's reagent that gives कौन alkane that gives alkane. Next पढ़िबा action with ferric chloride very 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 important reaction. This is the reaction that distinguish between alcohol with phenol. Action with ferric chloride. Very very important reaction, but this reaction distinguish between alcohol with phenol. But distinguish between so when phenol on react with neutral FeCl3 neutral that gives किन देखो रिएक्शन किन भाग देखो इटा भांगी देवी ट्रिक्स देखो भांगुदी आको भांगी Fe3 प्लस 3Cl माइनस ये फिनोल भांगी 6 फिनोक्साइड आयन प्लस 6H प्लस तो ये भांगिला मोर Fe3 प्लस 3Cl माइनस ये भांगिला 6 फिनोक्साइड आयन 6H प्लस तो 3H प्लस 3Cl माइनस दैट रिमूव as 3HCl 3HCl प्लस Fe3 प्लस ये होची 6 फिनोक्साइड आयन तेणु 6 फिनोक्साइड आयन अगेन आउट क्वेश्चन देखो 6 moles of phenol that gives heated with the FeCl that is neutral. तो हीट करवा कि देखो तो मुझे भांगी भी FeCl रु भांगी पारि Fe3 प्लस 3Cl माइनस तो आपको भांगी पारि 6 फिनोक्साइड आयन प्लस 6H प्लस तो ये कौन हम 3H प्लस 3Cl माइनस तो दैट रिमूव आज 3HCl प्लस 6टा H रु 3टा H गला पर के 3H प्लस प्लस 3H प्लस प्लस ये बर्तमान 6टा फिनोक्साइड गोटे आयरन अच्छी तेणु Fe और
হোল 6 প্রথমে চার্জ করে দেখো এটিকে গোটে ফিনক্সাইড -1 চার্জ তো 6টা আছে না তো -6 গোটে ফিনক্সাইড আয়ন -1 চার্জ এটি আমার 6টা আছে তেমন -6 প্লস Fe3+ চার্জ +3 তেমন +3 কেতে আসলা -3 এটি -3 বসাই দেবো ଆପଣ দিট ইজ এ ভায়োলেট কলর দিস এ ভায়োলেট color. Very very important reaction. What happen when phenol is heated with a neutral FeCl3 solution? When phenol is heated with neutral FeCl3 solution, that gives a violet color complex. Violet color complex with the release of H+ ion and a hydrochloric acid. Very very important reaction. This reaction distinguish between phenol with alcohol. ଆଉ ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି ଏଠି ଗୋଟେ ଭାଓଲେଟ୍ କଲର୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସଟା ଫର୍ମେସନ୍ ହେଉଛି ହେଲା ଏଗେନ୍ ଫିର ଆଉଥରେ ବି କହିଦେଉଛି ଦେଖ କାରଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରିଆକ୍ସନ୍ ସେଇଟା 6 ମୋଲ୍ ଅଫ୍ ଫିନଲ୍ 6 ମୋଲ୍ ଅଫ୍ ଫିନଲ୍ 6 ମୋଲ୍ ଅଫ୍ ଫିନଲ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ରିଆକ୍ଟସ୍ ୱିଥ୍ FeCl3 ତ ଇଏ ଭାଙ୍ଗିବ ଆମର Fe3+ 3Cl- ये भांगिब 6 फिनॉक्साइड आयन 6H+, तेणु 6 एटू 3H+ एटू 3Cl- क्या कर पड़ो 3HCl दैट रिमूव 3HCl प्लस H+ बोला कारण 6टा H+ थिला तो ये 6टा H+ 3टा H+ पड़ेगा 3टा H+ रहा प्लस 3H+ प्लस एटी 6टा फिनॉक्साइड विथ 1 आयरन तो Fe6 चार्ज बालांस करवा Fe3+ प्लस गोटे फिनॉक्साइड -1 6टा तो -6 तो के -3 तो चार्ज रहा -3 कौन आम दिस इज ए भायोलेट कलर कॉम्प्लेक्स तो ये थिला एक्शन विथ न्यूट्रल FeCl3 सॉल्यूशन तो नेक्स्ट बर्तमान पढ़ा अल्काइलेशन रिएक्शन बा हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन पढ़ा हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन एटा भी वेरी वेरी इंपोर्टेंट रिएक्शन फिर फिनल चैप्टर बहुत रिएक्शन पढ़े श्योर है हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन reaction तो हाइड्रोजिनेशन means when that phenol is heated with hydrogen in presence of nickel at about 533 केल्विन तो किंतु रिएक्शन जो देखो ये तो 3 मोल्स निहाजी ये गोटे बॉन्ड ब्रेक हम दिट इज एपटे गोटे एपटे गोटे ये गोटे बॉन्ड ब्रेक हम एपटे गोटे एपटे गोटे आउ गोटे बॉन्ड ब्रेक है एपटे गोटे एपटे तेल कौन से टोटाल बॉन्ड ब्रेक होगा तेणु जस्ट रिंग OH that gives cyclohexanol তাহলে what happen when phenol is heated with hydrogen in presence of nickel catalyst at 533 Kelvin by 533 Kelvin the 3 moles of hydrogen on heating with the phenol
that undergoes dissociation ଏପଟେ ଗୋଟେ H ଏପଟେ ଗୋଟେ H ଆଉ ଗୋଟେ H2S2 ଏଠି HH3S2 ତ ବଣ୍ଡ ଟୋଟାଲ ବଣ୍ଡ ବ୍ରେକ୍ ତେଣୁ OH ରହିଲା ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ସାଇକ୍ଲୋହେକ୍ସାନଲ୍। बर्तमान पढ़ा कपलिंग रिएक्शन वेरी 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 इंपोर्टेंट कपलिंग रिएक्शन ब्रिटिश फॉर्मूला कौन N2Cl when BDC is heated with phenol तो फिनल सहित हिट कले कौन आमर ये H अच्छी Cl कम पड़ेब HCl तो यहाँ को मीडियम मान रख दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट इन आइस कोल्ड सॉल्यूशन आइस कोल्ड सॉल्यूशन हिट कला Cl HCl पड़ला तापर आसला कौन N2 प्लस रिंग this is called para-hydroxy azobenzene para-hydroxy azobenzene plus HCl. This reaction is known as coupling reaction. This reaction is known as coupling reaction. Again out here repeat करके देखो what is coupling reaction when phenol and BDC heated N2Cl heat कल का विषय H एडु HCl पड़ेब आ रहिब रिंग N2 रिंग OH para-hydroxy azobenzene para-hydroxy azobenzene हला नेक्स्ट पढ़िबा action with phthalic anhydride action with phthalic anhydride action with বা condensation phthalic phenol when 2 moles of phenol that react with phthalic anhydride এটা বলে phthalic anhydride স্ট্রাকচারটা the 2 moles of phenol and heating with phthalic anhydride in presence of H2SO4 that gives phenolphthalein केमती रिएक्शन होजी देखो ट्रिक्सटा काटुची केमती एक्चुअली रिएक्शन होजी 2 moles of phenol आको phthalic anhydride कहाँ प्ले टू H पड़ेला after removal of water these two ring OH this is called phenolphthalein phenolphthalein again after play कोची when 2 moles of phenol when 2 moles of phenol is heated with phthalic anhydride this is called phthalic anhydride this is phenol
तो 2 moles of phenol थालिक एनहाइड्रेट हिट कौन करवा तो एठू H2O पड़ब दैट रिमूव एज वाटर गला कौन रिंग 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 सी सी सीओ सीओ ओ ओ ये बर्तमान ये H2O जो आकार गला ये कार्बन सहित दुईटा रिंग आटाच होगा दैट इज एंड दिस इज कॉल्ड phenolphthalein but this reaction is known as a phthalene reaction this reaction is known as a phthalene reaction phthalene reaction तो ये थिला एक्शन होती कपल मान एक्शन होती बीडीसी एंड एक्शन होती थालिक एनहाइड्रेट नेक्स्ट पढ़ा ऑक्सीडेशन ऑफ फिनोल प्ले भेरी 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 इंपोर्टेंट बहुत थर पचार परीक्षा ऑक्सीडेशन ऑफ फिनोल ऑक्सीडेशन ऑफ तो when phenol is oxidized by heated with air heat करले ल कौन पे प्लेट हु एच एस ले कौन हो ओ एडी खाली ओ रहला ओ डबल बतन ए बॉन्ड एडी डबल बॉन्ड बतन ए डायवर्जेंट एक्शन लागले एडी एडी लागले एठी कोन प्लस कोन H2O आम हछ कोन पारा बेंजो क्विनोन वेरी वेरी इंपोर्टेंट रिएक्शन प्ले पारा बेंजो क्विनोन तो अगेन आउ थे रिएक्शन में आउथे कुछ देखो व्हेन फिनोल हिटेड टू एयर इन ओ बॉन्ड ओ कर देली हिट कला पर एठू गोटे एच अछि हियर एच एच प्लस H2 लगे है दिस इज नोन एज पारा बेंजोक्विनोन पारा बेंजोक्विनोन है तो ये ऑक्सीडेशन ऑफ फिनोल इन बर्तमान पढ़ा लिबरमैन्स रिएक्शन वेरी वेरी इंपोर्टेंट लिबरमैन्स रिएक्शन एटा प्लीज स्क्रीनशॉट मार दियो लिबरमैन रिएक्शन is it treated with when phenol is treated with nitrous acid which net भांगी देली हमर H इधर H H2H H O completely ring it is OH एटा कौन है ए हाइड्रोजन एठी आसला पर प्ले कौन हो एठी हमर एठी केवल ओ रहबो ओ डबल बॉन्ड एठी कौन जे हमर OH हेजिबो कोन सॉरी NOH हेजिबो बतन आकु कौन करिया हमें अगेन दैट quinone this is called quinone again that a quinone again heated